एस्ट्रोलॉजी विल नेवर गो रॉन्ग। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। यू नीड टू हैव द टॉप 3 planets डिपेंडिंग अपॉन द हाउसेस। These planets जहाँ पर placed हैं, that will make you a great or a mediocre person or a less person. Final में the person with the best horoscope will win. KKR or SRH, who is going to be winning IPL 2024? Today I have with me astrologer Greenstone Lobo, who is going to answer just that. But before even we delve into कि KKR जीतेगा कि SRH जीतेगा, Greenstone, I really want to know what are the parameters on the basis of which you kind of predict the winners when it comes to sports? There are 3 things. Okay, number 1 is the captain. So you need to have the best captain in place. Captain का horoscope बहुत अच्छा होना ज़रूरी है. I mean, so there are various planets, you know. Like I mean, we're looking at the top planets: Uranus, Neptune, Pluto, and there are 4 asteroids. There are 3 asteroids. I call them as X, Y, and Z, and there is a 4th one called as Chiron. The top 7 planets अगर strong होंगे, and the best one. So normally you look at any IPL starting from 2008 till now. The captain with the best horoscope always wins. तो वो captain हो जाता है तो उसके साथ साथ में you will also have a good team. You'll also have a great coach. So there are 3 parameters from where I can check, verify, and then you can predict. It kind of depends only on the captain's horoscope. For example, अगर captain का horoscope is very strong, but there is some player जिसका horoscope weak है, who is the main player in the lineup. So how does it apply then? That's a good question. Actually speaking, we need to have the horoscope of each and every player. लेकिन वो possible नहीं है ना. तो जैसा वो राइस बनाते हैं तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कि हर एक दाना पक गया कि नहीं पक गया. तो थोड़ा सा अपने ऊपर से थोड़ा थोड़ा दाना निकाल लिया, देख लिया कि वो पक गया, then you know that it is good, right? So वैसे ही अगर एक टीम का देखना है तो then you look at the captain's chart. So that is the indicator or the barometer. Then coach and then the players. Right. So when it comes to sports, what is a good horoscope? What factors are there? So it's not just about sports, it's about anything in life. If you have to be a great politician, if you have to be a great business person, if you have to excel as a corporate person, you need to have the top 3 planets. Any of the top 3 planets can be strong. So the more the top planets are strong, the better you are. Which are? Uranus, Neptune and Pluto. तो इंडिया में इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. वी ओनली यूज़ प्लैनेट्स टिल शनि. लेकिन उसके आगे प्लैनेट्स हैं. अगर इसमें से जितने ज़्यादा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज़्यादा दैट बिग द पर्सन कैन बी. There is only one person in the last 20-30 years who has got all the 3 planets, Uranus, Neptune, Pluto, in strongest position. Wow, who is that? MS Dhoni. Oh my only God. Yeah. Okay. So planets तो ये strong है, Uranus, Neptune, Pluto या planet X, Y, Z. लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशन यू डू, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज इनटू द वर्क दैट यू आर डूइंग, मीडिया एंटरटेनमेंट, तो उनका 5th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है. तो कोई बैंकर है तो 2nd हाउस बहुत स्ट्रांग होता है. और कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो देन 3rd हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, विच इंडिकेट्स द हैंड्स. या लेग्स को 12th हाउस स्ट्रांग होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द हाउसेस, दीज प्लैनेट जहाँ पर प्लेस्ड हैं, दैट विल मेक यू अ ग्रेट और अ मीडियोकर पर्सन और अ less person. We have just reached the finals, but the biggest disappointment in this season has been Mumbai Indians. Yeah, I know. Big heartbreak for all of us. Yeah. What actually went wrong according to you with Mumbai Indians? See, again, it's all about the captain. So we're talking about Hardik Pandya. तो हार्दिक पांड्या के हॉरोस्कोप में, I talk about this planet Z जो मैंने आपको बताया, X, Y, Z. So वो एक planet जो है, that planet is in a very weak position in this horoscope. तो इस साल वो क्या किया, इस साल इट इज़ मूव्ड इनटू द वीकेस्ट पोजीशन, इनटू हिज 5th हाउस. 5th हाउस इज द हाउस ऑफ नेम, फेम, पॉपुलैरिटी. और वहाँ पर उसका उल्टा होता है. उल्टा होता है मतलब है कि यू गेट शेम, यू नॉट एबल टू डू वेल, यू नॉट एबल टू बी सक्सेसफुल. सो 5th हाउस ऑल्सो मीन सक्सेस एंड ग्लोरी. सो अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू फेस all of these things. You know what happened with him, right? So off the pitch जो हुआ वो भी चीज़ था, प्लस ही वॉज ऑल्सो नॉट गोइंग थ्रू द गुड टाइम. सो अनफॉर्चुनेटली इस साल उनका हुआ है. बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट हार्दिक पांड्या हैज गॉट अ वेरी गुड हॉरोस्कोप. सो लेट्स नॉट राइट हिम ऑफ. जितने भी लोगों ने उनको राइट ऑफ किया है, they will all have to eat their words. So Hardik Pandya, if you're watching this, it's just a matter of time and it's just the planets. Absolutely. फेज है, ग्रेड्स ऑलवेज विल डू वेल. ओके, फेज ऊपर नीचे चलता रहता है. Greenstone, coming to the final tomorrow, what do you have to say about
the lineup of KKR and SRH, who can shine tomorrow in the match? KKR का मैं आपको बताता हूँ कि one of the good thing is that they have a great captain. Okay, Shreyas Iyer has got a very good horoscope. So I had always been maintaining that Shreyas will do very well. लेकिन बात ये है कि he is against the captain. Sunrisers Hyderabad का जो captain है, Pat Cummins. He has got the best horoscope at this point of time. जितने भी cricketers available हैं, any cricket player in the world, उनमें सबसे best horoscope अगर किसी का है तो वो पैट कमिंस का है. ओके, सो कैप्टन की बात चलो वो निकाल देते हैं. एंड इफ यू गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल, अगर हम टीम्स की बात करेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स, द ओपनर्स, आई मीन इफ यू गोइंग टू टॉक अबाउट उनका जो बिगेस्ट टर्न अराउंड का जो मेन द वेपन जो है, द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द होल थिंग इज सुनील नारायण. लेकिन सुनील नारायण जो है वो everyone will say that he's a great player, इतना कुछ किया है. लेकिन I will say that one of the reason why they will not win the IPL is because of Sunil Narayan. Okay, and there is another man. Okay, उनका again you are looking at the 88 born players उनका जो है. So I'm talking about Andre Russell. So they are born in 88 and both of them. और इन दोनों, see there is something called as karmic quota. Karmic quota का मतलब क्या होता है कि वो एक बहुत पॉपुलर अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता. ठीक है, सो वो एस्ट्रोलॉजी एकदम उसके ऊपर आधारित है. ओके, सो इन दोनों का जो है ना, इनका किस्मत बहुत ज़बरदस्त है. ओके, आंद्रे रसल, सुनील नारायण. लेकिन ये दोनों जो हैं इनका वक्त अभी नहीं है. सो वक्त एक समय में था. सो दे हैव फैंटास्टिक हॉरोस्कोप्स. दे हैव बीन पार्ट ऑफ Sunil Narayan 1 World Cup, Andre Russell 2 World Cup, both of them have already won IPL. So they have done it all. But at this point of time, if you're looking at the planets, the strongest planets, current transit जो होता है, transit means the planet which are moving at this point of time, the strongest planets are Neptune and Pluto. Okay. तो Neptune and Pluto जिनका कुंडली में strong है, only those players will do well now. So if I'm going to look at that, then the team, if you're looking at Sunrisers Hyderabad, yes, the entire team, you start from Rahul Tripathi, Natarajan, Klaasen, Unadkat, Travis Head, ये सारे के सारे early 90s में जन्म लिए हैं. And all of them have Pluto very strong. Okay. All of them have Neptune very strong. So there are like almost 8 players who were born in the early 90s. तो इनका astrological balance थोड़ा कम है. And the very important thing क्या है कि जैसे मैंने कहा कि see there is a karmic. How does Pluto impact? Pluto is the most powerful planet in the universe. Okay, it is like you equate it to Lord Shiva. Okay, so it is सबसे farthest but still most powerful. Exactly, because it is the farthest, it is the most powerful. Wow. So जितना ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा उसका प्रभाव, उतना ज़्यादा impact, उतना बड़ा आदमी. See, छोटा मोटा planet जो है गुरु, they are all very very close by. Venus is all, they are very very close by. Their impact is very small. But the planet, the farther the planet is, the more dynamic and then more impactful and then more bigger the success. And Pluto was responsible for bringing the COVID? Yes, you are right. अरे you बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. Okay, so Pluto moved into the zodiac sign Capricorn. तो मकर राशि जो होता है, it is all about your family. Okay, so what he did was, see, in before COVID, everyone was running around, moving around, family values सब कुछ खत्म. Okay, and Pluto ने क्या किया? It moved into Capricorn and it said, okay, I'm going to bring in the value system, the family value system into you. So what it did, it made you sit down together with your family. So you have to be with family, eat with the family, be with the family, love your family. वो कर दिया. Okay, so now everybody is talking about फैमिली वैल्यू सिस्टम. और आप देखोगे कि जितने भी चल रहा है आसपास में, इट्स ऑल अबाउट योर रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट योर कल्चर. वी आर सेइंग दैट हमारे इंडियन ट्रेडिशन इज ग्रेट. हमारे यू लुक एट एनी, यू ओपन वीडियोज, यू ऑलवेज सी योगा, मेडिटेशन, इंडियन कल्चर. इट्स ऑल गोइंग बैक टू द रूट्स. क्यों? दैट्स बिकॉज प्लूटो इज इन कैप्रिकॉर्न. So Pluto is the most powerful planet. It's that transformative. Yes, you're right. You are using all the right words. क्या बात है? You know a lot of astrology, it seems. Yeah. So yes, it's right. It is a planet of transformation. It brings in the change. So that planet will be responsible for tomorrow's final also. Okay, coming to the captains now. Pat Cummins, a very strong. Yeah. See, if you see, दोनों Pat Cummins and Shreyas Iyer, both of them are born in a difference of just 1 year. Okay, Shreyas Iyer is born in 94, Pat Cummins is born in 93. But Pat Cummins का जो chart है ना, it is like tailor made है for super success. Okay, Shreyas Iyer is like almost missed the greatness. तो इसीलिए वो final तक, see this team was in the very bottom में थे, like in the last year. Chandrakant Pandit has a very powerful chart, so he made a big turnaround. Okay, but then the biggest turnaround was made by Sunrisers Hyderabad because they were at the number 10.
नंबर 10 से नंबर 1-2 में आ गए and they will win the final also. Because it's like the captain has an extraordinary shot and Daniel Vittori, जो इनका जो कोच है, so see he was the coach of Sunrisers Hyderabad for more than a decade. बहुत साल थे वो, एंड वो उस टाइम पे कोच थे जब उनका प्लूटो वीक था. मतलब प्लूटो वाज इन अ वीक पोजीशन, इट वाज डेबिलिटेटेड, इट वाज इन अ वीक पोजीशन फॉर सो मेनी इयर्स इन द लास्ट डेकेड, पैंडेमिक के पहले. तो उस टाइम में वो बेचारे वो आरसीबी के कोच थे एंड ही कुडंट डू एनीथिंग. लेकिन अब क्या है, उनका कुंडली में प्लूटो एंड नेपट्यून बहुत पावरफुल है. राइट नाउ नेपट्यून एंड प्लूटो बहुत पावरफुल है. सो all the planets which are very strong has come, they transited into his chart also. Sunrise Hyderabad ka coach is also having a great chart. So everything is working in favor. And last very important thing जैसे मैंने कहा कि it's all about the karmic quota. Quota means आपने कितना मैच जीता है उसके ऊपर भी है. Before we come to the final, अभी तक इनके बीच में सनराइज हैदराबाद एंड केकेआर के बीच में ये 2 मैच हो चुका है, ये तीसरा मैच है. और पहले दोनों मैच केकेआर हैज वन. ओके, so which is very very clearly shows that जितना श्रेयस को जीतना था उन्होंने जीत लिया है. Right. Okay, the third match will be won by Pat Cummins. Very unfortunately for Shreyas, there is a final. Okay, and final में the person with the best horoscope will win. And 3 होना चाहिए, तो उनको कम से कम इनको एक तो जीतना ही चाहिए. Right. तो वो जीतेंगे. Okay, अब तो क्लियर हो चुका है. According to the astrology, Sunrisers Hyderabad would win. But my question to you is, while astrology बहुत ही strongly बताती है ये चीज़ होगी, एंड में क्या कुछ ऐसे factors हो सकते हैं which kind of overturns those predictions? Astrology will never go wrong. Astrologer can go wrong. ठीक है? So if at all anything goes wrong, it would be my interpretation going wrong. Planets are only the messengers of the god, right? So we are trying to read and interpret. तो interpretation हमारा गलत हो सकता है, लेकिन वो प्लान एकदम सही चलता है वो. So if it goes wrong, then you have to go back and see हमने गलत क्या किया है. ठीक है? But plan is always right. So you will always find that, oh, you have done something. Oh, यार ये miss कर दिया. Astrology will never go wrong. So maybe it's tomorrow that will tell us who wins, KKR or SRH. But what remains the highlight is that tomorrow is going to be an extremely exciting match for cricket fans world over. So thank you so much, Greenstone. Thank you so much for your astrological insights. And you cricket lovers, stay tuned to Midday for more such interesting videos. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.